Hi everyone, my name is Renchi. Today I'm going to share with you next new cue card that is from May to August cue cards, market cue cards list. And this is new cue card and this sample answer is of more than 6.5 plus bands. You can get idea, get vocab, you can use in other cue cards or your day-to-day conversation also. So without wasting so much time, let's have a look at this cue card. And here is this cue card. Describe an art and craft activity that you had at school. What you made, how you made it, how it looked like, and explain how you felt about this activity. Now, let's start my sample answer. During my school days, art and craft was one of my favorite subjects. I have indulged myself in so many art and craft activities. Also, I have participated in numerous such competitions. Here, I wish to talk about an engrossing, it means interesting, art activity I did at school. I have vivid memory of that time when I was in 12th grade. An art competition was held. All the participants were asked to draw a beautiful painting, and we were supposed to complete it within half an hour. As for my painting, it was representing a village life. Now let's translate it into Hindi so that you can get meaning of vocab or sentences more clearly. During my school days, मैंने स्कूल टाइम में आर्ट एंड क्राफ्ट जो था वो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स वो एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. आई हैव इंडल्ज्ड माई सेल्फ इन सो मैनी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़. मैंने बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ की थी. ओके, हैप्पीली, एक्साइटेडली, बहुत खुश होकर ये ऐसी एक्टिविटीज़ मैं करता था या करती थी. मैंने पार्टिसिपेट किया था इन न्यूमरस सच कॉम्पिटिशन्स. ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था. यहाँ पे मुझे याद है कि एक एक्टिविटी एनक्रोजिंग, इट मीन्स इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. और तब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और हम सभी को एक ब्यूटीफुल पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए कहा गया था और हमने विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में हमें इसे कंप्लीट करना था और सबमिट करना था. और मेरी पेंटिंग की, अगर मैं अपनी पेंटिंग की बात करूँ तो मैंने एक विलेज लाइफ के ऊपर बनाई थी. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The essential material that was required when painting was provided by our school. I painted some houses and a duck pond nearby. Moreover, weaving crops were shown. There were some domestic animals. On the left side, one lady was pulling water from the well. It was morning time. Sun was peeping through. यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया. Peeping through the mountains. Also, I drew some birds flying. This all was a wonderful glance of our village life. Frankly speaking, I was satisfied and deliriously happy after making it. Our teachers said that it's breathtakingly lovely painting. The essential material, जो essential material चाहिए था इसको बनाने के लिए, वो स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था. I painted some houses. मैंने कुछ houses बनाए थे, ड्रॉ किए थे, पेंट किए थे. And a duck pond, और एक duck pond भी था nearby. मोरओवर वीविंग क्रॉप्स दिखाई गई थी, जो लहराती हुई फसलें थी वो दिखाई गई. देयर वर सम डोमेस्टिक एनिमल्स थे. और ऑन द लेफ्ट साइड एक लेडी जो पानी निकाल रही थी, ओके, फ्रॉम द वेल. इट वॉज मॉर्निंग टाइम था. सन वॉज पीपिंग थ्रू द माउंटेन्स. पीप थ्रू इट मीन झाँकना. ओके, झाँकना. सन जो माउंटेन से झाँक रहा था. इट मीन्स इट वॉज अबाउट टू राइज. और मैंने कुछ उड़ते हुए बर्ड्स को भी ड्रॉ किया. ओके, दिस ऑल वॉज अ वंडरफुल ग्लांस. इसमें से एक झलक मिलती थी ऑफ अ विलेज लाइफ की एक झलक मिलती थी. आई वॉज सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड था. डिलीरियसली हैप्पी, बहुत खुश था आफ्टर मेकिंग इट. हमारे टीचर्स ने कहा इट्स ब्रेथटेकिंगली लवली पेंटिंग. इट मीन्स इट्स सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली, इट्स वेरी वेरी ओके लवली पेंटिंग. Breathtakingly, it means in a way that something takes your breath away. Something that is beautiful in a way that is exciting, surprising, shocking. Okay, now let's move on. I must say it was really enjoyable activity. ये एक enjoyable activity थी. Although I was not exceptionally good at this skill, although मैं exceptionally it means very, बहुत अच्छा नहीं था, very good नहीं था at this skill. I could perform very well. फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा
परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी कोशिश की. When the performance of all students was evaluated, I was at second position. I was announced at second position. I was happy that my hard work paid off. It means मेरी hard work ने good result लेकर आई. मेरी hard work, जब आपके efforts, आपकी hard work, जब आप बोलते हो my hard work, my efforts paid off, it means कि it brought good results. My hard work, my efforts brought good results. Okay, paid off. This is phrasal verb. Pay off, paid off, paid off. Pay off. Pay is first form. Paid second form, or third is also paid. From that time onwards, I never missed the boat to participate in such competitions. उस time के आगे मैंने कभी भी miss the boat. This is idiom. It means miss the chance, miss the opportunity. मैंने कभी भी ये opportunity miss नहीं की. कौन सी? To participate in such competitions again in my life. भी आगे कोई भी competition अगर आया मैंने definitely participate किया. ये मौका मैंने हाथ से जाने नहीं दिया. Okay. एंड इंक्रीज माई एक्सपीरियंस, और मेरा एक्सपीरियंस इंक्रीज करने की जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ऐसे कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करके, तो मैंने जाने नहीं दी. स्टिल आई डू दिस एक्टिविटी एवरी नाउ एंड देन. एवरी नाउ एंड देन इट मीन्स नॉट रेगुलरली. एवरी नाउ एंड देन इट मीन्स कभी समटाइम्स, कभी कभार मैं ये एक्टिविटी करती हूँ, विच गिव्स मी अमेजिंग फीलिंग्स, और मेरी फीलिंग्स अमेजिंग होती है. So friends, thanks for watching and happy learning.